So today we are going to be deep diving into the syllabus, strategies, and resource reviews, mainly related to AKU test, right? I hope everybody can hear me. Okay. So here is the short overview of what we'll be discussing in this webinar. We'll be talking about syllabus के AKU में AKU का syllabus क्या होता है और उसके high yield topics जो होते हैं, ठीक है, we'll go through कि अभी आपको सारे topics करने चाहिए या फिर high yield topic करने चाहिए, ठीक है, और फिर AKU test में पास होने की criteria क्या होती है, and then examination hall में जो चीजें आपको याद रखनी है उनके बारे में हम बात करेंगे. We'll talk about time management and the test. We'll talk about science reasoning guidelines, and we also have sample questions. So in the later slides we have 2 sample questions of science reasoning for you guys to see if science reasoning में किस तरह के questions आते हैं. ठीक है, so we'll talk about those as well. We'll discuss the correct answers as well, right? So we have sample questions. We also have some fun polls and questions, open-ended and multiple choice for you guys to just interact. So it'll be a fun little webinar, okay? And then we'll also talk about ways to deal with tricky questions. So कुछ ऐसे questions होते हैं जिनके answers आपको बिल्कुल नहीं आते, so what to do with that, with those questions. And we'll also ask you कि आप क्या करते हैं वैसे, right? So it'll be fun, okay? So just stay tuned. We'll also talk about why should you be applying and choosing AKU over other universities, if at all, right? I'll also be going through the things that I wish I knew when I was applying for AKU, right? So that you guys have a heads up right now, okay? So moving on, right? So okay, so can everybody please scan this code? Okay, so we're starting with this fun little quiz. So it's basically a little question that you guys need to answer, right? तो हम webinar में जाने से पहले we will be basically just assessing okay, what do you guys think about AKU test or admission tests generally, right? So can everybody please scan this code and go and follow the website and answer the question there. Okay, so we'll talk about everything. Can you please just go on to this little QR code? Please scan this QR code, follow the website. And for people who can't scan, I have commented subcomments में जाओ and I've posted the link as well. So you either follow the link or scan the QR code, okay? But either way, can everybody go onto this website, please, and answer the very first question? So you can either use Google Lens or you can take a screenshot and then put that in your okay. Okay, so can everybody answer the question?
Okay, so we already have two answers. Okay. Okay, I'll open the code. And also, once you've joined it, please stay logged in because we're gonna be doing this a couple of times. ठीक है, तो आप एक दफा स्कैन करके फिर उसको उस टैब को ओपन करके रखें, ठीक है? So everybody scan and answer the question. Everybody has so all of you have 2 minutes to do that. Otherwise, we'll move on if you guys can't figure it out. Okay. Acha. Okay. So the question was, what's your biggest admissions test fear? कि आपको एडमिशन टेस्ट के दिन या फिर एडमिशन टेस्ट से सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है, right? And 20% of you said running out of time. 20% of you said tricky vocabulary or math. 40% of you said test and nerves, and 20% of you, actually 33% of you said guessing wrong. Okay, so we're seeing the results changing a little. 40%, 14%, 14%, 29, and 43%. So a lot of you are saying कि guessing wrong. कि आप गलत guess कर लें question को. So that's your biggest fear. Okay. So I just wanted to tell you कि हम आज इन सब चीज के बारे में बात करेंगे. ठीक है? So whatever your biggest fear is, जो भी चीज है जिससे आपको डर लगता है, हम आज समझेंगे कि we'll try to give you some strategies to basically let not let that happen. ठीक है? कि अगर आप so what are the things that you can do जिससे आप you can make sure कि at least आप so you do your best to not guess it wrong. ठीक है? How to make an educated guess. So we'll talk about that. हम इस हर इन चारों चीजों के बारे में and even more. We'll talk about a lot of things today, right? Okay, so back to our presentation. तो वो वेबसाइट आपको खोल के रखनी है because we'll go back there again in a couple more slides. Okay. अच्छा, तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो AKU का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और वो उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है basically. So if you just go onto their website, go to the curriculum and follow the links, you will find the syllabus, right? So AKU का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इस वक्त अगर आप टाइम को देखो तो you only have 2 months to prepare, which is not which is not a little time, right? When I was studying, preparing for the AKU, right? When I was studying for AKU, I only studied for 2 months after my boards ended, right? The 2 months is a lot. कि अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक शुरू नहीं किया पढ़ना or you're in big trouble, that's not true. अगर आप अभी से if you like lock in right now, I think you can you'll still be able to ace the test, right? तो आपको ये ध्यान रखना है कि you focus on your test, you give your best, and you will basically most likely be able to ace the test, right? The syllabus I know बहुत ज़्यादा है, but I think you guys should be now focusing on high yield stuff. ठीक है? So high yield stuff में जैसे biology में सबसे ज़्यादा questions आते हैं. I think जो bioenergetics का topic है वहाँ से questions आते हैं. There are questions from respiratory, cardiovascular वाले जो topics हैं. So those are important topics. There are questions from animal kingdom, plant kingdom. So I think okay. So most important thing for AKU is the plant section. ठीक है? So plant section से there are like a lot of questions जो कि we think वो नहीं आते, right? But basically plant section से AQ में बहुत ज़्यादा questions आते हैं, right? So please do those of every chapter. Do
plant ka section and also the humans and animals wala section, right? But yeah, so I think you guys should be focusing on high yield things or high yield chapters जो हैं वो I think आपको pre-med से मिल चुके होंगे. But yes, so अगर आपके पास time नहीं है तो high yield पे focus करें, or you'll be able to most likely pass the test. All right. So yeah, syllabus is, so follow the syllabus. Yes, the kingdom plant वाला chapter, और वैसे भी like हर chapter में plant का portion होता है ना, जैसे reproduction में plant का portion है, right? And then cardio respiratory में भी plant का portion है, right? Transpiration वगैरह, तो ये जो सारे topics हैं, please do those because वहाँ से questions आते हैं. ठीक है, so plants or animals दोनों portions से questions आते हैं, and I think they divide them equally most likely because बहुत सारे questions आ रहे होते हैं plant वाले में. ठीक है, a lot of questions are from photosynthesis to bioenergetics वाला question भी important है. ठीक है, and then respiration which happens in both plants and animals, so that is an important common topic जिससे questions आते हैं. I think we had one of the questions from bioenergetics, a question I remember. And I also remember getting it right after thinking a lot about it. So yes, I think that is an important chapter. Okay, now तो हम बात करेंगे कि AQ के क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं. ठीक है, I would say that AQ के questions are a little different from other tests, MDCAT of any province basically. So yeah, I think AQ के questions थोड़े मुख्तलिफ होते हैं. ठीक है, so AQ can ask you three types of questions. ठीक है, the questions may be comprehensive. ठीक है, the questions may be application based, right? Or they can just be recall. ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना वो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस किस तरह होते हैं? So a lot of people tell you कि understanding based, conceptual, comprehensive questions, but what do you think comprehensive questions are? So let me give you an example कि comprehensive questions कैसे होते हैं. For example, आपने पढ़ लिया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसका काम होता है protein synthesis because they have ribosomes on their surface, right? तो उनका काम है protein synthesis. That is knowledge. ठीक है, अगर वो आपसे पूछ रहे हैं ना कि rough endoplasmic reticulum का काम क्या है, what is its job, and they give you a couple of options. One of them is protein synthesis, and you tick that. That is a recall question. ठीक है, and that is very easy to answer, okay, and also very easy to forget when you're in test. बहुत सारे recall questions होते हैं. Recall questions are basically रट्टे वाले questions जो आपने पढ़ा, याद किया और फिर वहाँ किया आपके questions में straight forward answer आप वो tick करके आए. Those are recall based questions. But AQ does not ask you recall based questions. They ask you comprehensive questions. Now, what is comprehensive based question, right? Okay, so I'll tell you what that is. So for example, they ask you okay, so if you make this comprehension based question, that they'll ask you where in the body are rough endoplasmic reticulum abundant, right? कि RER सबसे ज्यादा body में कहाँ होता है. Now you need to think कि rough endoplasmic reticulum का काम क्या होता है, right? इसका काम होता है protein synthesis करना, और सबसे ज्यादा protein synthesis कहाँ पे होती है? Now that is a comprehensive question, the second degree question, जिसमें एक चीज बताते हैं, दूसरी चीज कनेक्ट करनी होती है to reach to the third answer. ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, these are comprehensive based questions, comprehension based questions, right? Or comprehensive questions. ठीक है, so you'll think कि rough endoplasmic reticulum का काम होता है protein synthesis, and सबसे ज्यादा protein synthesis body में कहाँ पे होती है? Liver में होती है, right? So they'll probably be most abundant in hepatocytes, right? Liver के जो cells होते हैं. If that is a little let's say higher level for you, तो आप ऐसे तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि they'll tell you कि लिवर में सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो लिवर में होती है, तो आप हमें बताओ कि कौन सा ऑर्गेनेल लिवर में सबसे ज्यादा होगा, right? So now again, this is comprehensive question, right?
they aren't asking, basically what they're asking you is what you need to think or what you need to know to answer this question is कि रफिनोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, right? That's all you need to know basically. This is such a simple question, but वो थोड़ा twist करके पूछता है ना. So that's what comprehension is. ठीक है, कि आपको क्या, can you connect, can you think on it, can you comprehend the concept, can you recall the concept. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, but a little less than comprehensive questions if you think about it, and recall questions are very very less. ठीक है, so please now you know कि आपको कैसे पढ़ना है. ठीक है, आपको किस तरह से पढ़ना है. You need to know the concepts. AQ के लिए आपको हर एक चीज याद करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, if you skip like 5 chapters in a subject, you'll still be able to pass the test if you know the concepts of rest of them. ठीक है, so please get your concepts right and focus on your comprehension. ठीक है, are you able to comprehend the concept? ठीक है, सिर्फ याद करना नहीं होता. You have to like understand कि किस तरह के questions आते हैं. ठीक है, तो आपको ये comprehension पे ध्यान देना है. ठीक है, अपनी comprehension, अपनी understanding and अपने concepts पे ध्यान देना है. ठीक है, जो एक के questions होते हैं, there are 100 questions होते हैं जो आपको solve करने होते हैं 120 minutes में. ठीक है, half of the questions, जो 50 questions होते हैं वो science achievement के होते हैं. ठीक है, and science achievement is biology, chemistry and physics. ठीक है, तो आधे questions science achievement के होंगे और आधे questions science and math reasoning के होंगे. ठीक है, and remember आपको दोनों sections को pass करना है और दोनों की 50-50 questions होते हैं. Alright, okay, so passing criteria, जैसे कि मैंने बोला कि आपको दोनों sections को separately pass करना होता है. ठीक है, you're required to pass both the sections separately. ठीक है, तो जो कट ऑफ होता है वो यूजुअली 60 to 65% होता है. आई रिमेम्बर हमारे टाइम पे जो कट ऑफ था वो 63% था फॉर बोथ द सेक्शंस. ठीक है, तो सो यूजुअली इतना ही होता है. ठीक है, लास्ट टाइम इट sort of went as high as 80% something, if as far as I remember, but वो क्योंकि उनकी टेस्ट बहुत ज्यादा आसान आई थी or so people like got 90% or something. But remember आपको दोनों को पास करना है और so you do not need to worry about कि आपका स्कोर कितना ज्यादा है या कितना कम है. ठीक है, as long as you pass, as long as you are within the passing criteria, you are good to go. ठीक है, so मुझे ऐसे भी लोग मुझे पता है जिन्होंने for example science achievement में 90% ली थी. ठीक है, science achievement में it was like, so they take for example उनके 90% आते हैं science reasoning में, sorry science achievement में, so they get 90% in science achievement, लेकिन वो reasoning portion pass नहीं कर पाते. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो पास नहीं कर पाते, so they fail the test overall. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 90% नहीं लाना, आपको दोनों sections को पास करना है. ठीक है, and I'll tell you what कि most of the people who pass or get into AKU have very low score compared to as you would expect, right? उनके scores बहुत कम होते हैं. ठीक है, so it's okay अगर आपके कम स्कोर आ रहे हैं as long as you pass the test. So please don't worry about कि आपको सारे questions सही करने हैं या फिर आपको you need to get 90% or 100% on your test. आपकी टेस्ट के scores जो है ना वो सिर्फ यहाँ तक काम आते हैं कि you have passed. Once you pass, your test scores literally they have no use. ठीक है, उसके आगे आपके टेस्ट scores किसी काम के नहीं होते. So you just need to pass. So I will emphasize on that कि आपको सिर्फ पास करना होता है और doesn't matter what score you get. ठीक है, so try to pass both the sections. ठीक है, because that's the only way you'll get in. Okay, right. So अब exam hall में so आपको दोनों sections को pass करना है. दोनों sections के आप subjects मिलाओ तो you have 5 subjects. You have 100 MCQs and very little time. ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है. ओके, सो एग्जामिनेशन हॉल की स्ट्रेटजीज पे बात करें तो सबसे पहले जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि सो you guys are scared of
So you guys are scared of uh, test day nerves, ठीक है? कि आपको बहुत anxiety होती है. You guys get anxious, right? Is that true? That's true, right? So everybody gets anxious on test day. So what do you do about that? First of all, you need to be calm. आपको calm रहना होता है, ठीक है? Or because that's only how you can think. ठीक है, that's only how you can think in the exam. तो आप क्या कर सकते हो कि जब आप टेस्ट शुरू कर रहे हो तो do a little breathing exercise for 30 seconds. 30 seconds के लिए just breathe in and breathe out. Take deep breaths, exhale, inhale, right? So do that. I think that should be able to calm you down. If not, you just need to like work on that, I think, because well, that's all I can say. But yes, it's important that you're calm. ठीक है, you can do breathing exercise. आप अपने साथ कैंडी लेके जा सकते हो. Also, AKU brings doctors, right? तो वहाँ पे doctors भी होते हैं. If you feel very anxious and you think कि आपसे टेस्ट नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ठीक है, you're um, losing your mind, तो आप डॉक्टर से जाके बात कर सकते हो, ठीक है, and it's fine. Because you need to at least you'll be calm for the rest of the test. अगर आपका थोड़ा सा टाइम चला भी जाए तो it's fine, ठीक है. तो आपको calm रहना बहुत जरूरी होता है. उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट के लिए there are two ways that you can go about it, ठीक है, कि आप टेस्ट को किस तरह से अप्रोच करें, ठीक है. तो आपके so if you think about it, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सेक्शंस हैं जिससे आपको एमसीक्यूज मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है. जो मैंने किया था अपनी टेस्ट पे, मैंने 20 मिनट्स हर पोर्शन को दिए थे. सो 20 मिनट्स फॉर बायोलॉजी, 20 minutes for chemistry, 20 minutes for physics, 20 for maths reasoning, and 20 for science reasoning. ठीक है, मतलब कि so 60 minutes यानी 1 hour to science achievement, and then 40 minutes to reasoning portion. और लास्ट में मेरे पास 20 minutes बच गए थे, ठीक है. और उन 20 minutes में I went through the whole test again. जो मैंने questions मार्क किए थे कि मैं फिर से समझूंगा, ठीक है. I'll try to, जिसमें मुझे डाउट था बहुत ज्यादा या फिर जो मैंने नहीं सॉल्व किए थे, so I went back. For example, अगर मैंने फिजिक्स को 20 minutes दिए हैं और मेरे लास्ट में 3 questions रह गए हैं, so I in last 20 minutes I came back to those questions again, और मैंने उनके बारे में फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश की, right? So this is a good way to manage your time. उसके अलावा what's another way कि अगर आपको टाइम टाइम बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं रख पा रहे टाइम का, तो आप क्या कर सकते हो कि आप सेक्शंस के बीच में अल्टरनेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, आपने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, ठीक है, यू डिड बायोलॉजी, and then instead of doing chemistry you go to reasoning portion, ठीक है. आप रीजनिंग पोर्शन से मैथ सॉल्व कर लो पहले, ठीक है. आपने मैथ सॉल्व कर ली and then come back and do chemistry, ठीक है. केमिस्ट्री करके you go back, do science reasoning, ठीक है, and then come back, do physics, or whatever the sequence that you want to follow, but alternate. आप दोनों sections के बीच में alternate करो, ठीक है. तो इससे क्या होगा कि आप दोनों पोर्शंस को मोस्टली सेम टाइम दे पाएंगे, ठीक है. दोनों पोर्शंस को आप थॉटफुली, ठीक है, अपना लाइक दिमाग लगा के कर पाएंगे, ठीक है. सो आप ये भी टेक्निक फॉलो कर सकते हैं. उसके अलावा व्हाट एल्स यू कैन डू इज कि डिवाइड द टाइम बेस्ड ऑन, आपको क्या लगता है कि would you be able to solve the whole biology 15 मिनट में? Can you do that? So allocate 15 minutes to biology but 25 minutes to physics because आपको फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है. और ये आप कैसे फिगर आउट कर पाएंगे कि आपको फिजिक्स में ज्यादा टाइम लगता है? So what you can do for that is कि आप प्रैक्टिस करें, राइट. आप टाइम्ड टेस्ट सॉल्व करें, ठीक है. टाइम रखें अपना 2 hours का एंड सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, एंड देखें कि आपको कितना टाइम लग रहा है. एंड दैट्स आल्सो हैव अ स्ट्रेटजी इन माइंड कि आप टेस्ट में क्या करेंगे, ठीक है, ताकि वहां पे you're not overwhelmed thinking about how you're going to go about the test, ठीक है. तो इसके बारे में आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ठीक है. So these are a couple of ways that you can follow. मैंने अपनी strategy भी बताई. I told you 2 more strategies. तो आपको जो भी follow करनी है, whatever you think works for you, वो आप follow करें, ठीक है. Okay, so now before we go there, we are again going to तो क्या, can everybody please go back to the
website. Okay, can everybody go back to the website, please? क्या आप लोग सब प्लीज अपनी फोन्स में क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर लिंक को फॉलो करके प्लीज ओपन कर सकते हैं, because we now have another question. Can everybody go back to the... Okay, okay. So one of you is saying, so the question is, what strategies do you think will be helpful in saving time? One of you said leaving hard questions for the end. Can more people answer? क्या बाकी लोग भी please जा सकते हैं और answer कर सकते हैं? So practice. You guys are saying practice. Okay. Focusing on one thing. Okay. To make chunks organized. Okay. Doing the science achievement section quickly. Okay. Math reasoning may take more time. Okay. So these are okay, crying, right? Fill bubbles in last 20 minutes. Injecting steroids. Okay. These are some fun answers that we're getting here. अच्छा, तो एक ने बोला है filling bubbles in last 20 minutes और एक ने बोला है filling answers as we go. Then review it again. Okay. So we have some contradicting answers. All right. So एक और ने भी बोला है mark correct answers and start. Daily work. Okay. Smart working. Okay. Hard working. Okay. So okay, let's see. So I'll tell you what I think are good ways to manage time more effectively. ठीक है कि मुझे क्या लगता है. ठीक है. तो you have divided the time, but how do you save time? कि जिस question पे, for example,
2 मिनट लगने हैं, उस पे आप 3 मिनट 4 मिनट ना लगा दो, ठीक है? तो आप टाइम कैसे बचा सकते हो? ओके, तो पहला पॉइंट है, डू नॉट हाफ रीड क्वेश्चंस एंड लीव टू कम बैक टू लेटर। ठीक है? तो मेरे मेरे दोस्त ने क्या किया था कि वो फिजिक्स का क्वेश्चन, सो शी वुड रीड हाफ द क्वेश्चन, ठीक है? वो आधा क्वेश्चन पढ़ रही थी और फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो वो छोड़ के फिर दूसरे क्वेश्चन में जा रही थी, ठीक है? और फिर वो आधा क्वेश्चन पढ़ रही थी, लेट्स से उसको समझ में नहीं आ रहा, तो वो तीसरे क्वेश्चन पे जा रही थी, ठीक है? सो यू डोंट डू दैट, ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि आप वो आधा क्वेश्चन पढ़ने में जो टाइम लग रहा है वो ज़ाया हो रहा है, ठीक है? और फिर आप उस पे वापस आके आप पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हो, ठीक है? सो बेसिकली आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो आपको ऐसा नहीं करना। डू नॉट हाफ रीड क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन को आधा पढ़ के और फिर कुछ बगैर सोचे, जस्ट बिकॉज़ यू थिंक इट्स हार्ड और just because आप ज़ोन आउट हो गए पढ़ते-पढ़ते, just leave it and go to the next question, ठीक है? और फिर उस पे आप वापस फिर से उसको पढ़ने आओ, तो आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है? अगर आपको एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन आप उस पे पूरा सोचें, ठीक है? Try to think, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं आएगा, then okay, move on, but otherwise do read the question, think about it and answer if you can, ठीक है? आपको ऐसे आधा-आधा नहीं पढ़ना, ठीक है? So don't half read questions. Okay, so because उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। Next up, we have mark your OMR sheet simultaneously, ठीक है? Unless you're unsure कि आपको अपनी OMR sheet, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको आंसर आता है, mark it on the OMR sheet, ठीक है? आप अपने बबल्स ऑलरेडी फिल कर लो, ठीक है? इससे क्या होता है कि लास्ट में जब फिल करने आते हो ना, तो इट बिकम्स वेरी chaotic, ठीक है? बहुत ज़्यादा chaotic हो जाता है, ठीक है? तो क्या होता है, देयर आर हाई चांसेस कि आप सीक्वेंस मेस अप कर दोगे, क्वेश्चन नंबर मेस अप कर दोगे, ठीक है? या फिर आपको टाइम नहीं बचेगा सॉल्व करने का, बिकॉज़ वी आर सो इन्वेस्टेड इन इन रीडिंग एंड सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस कि आपको टाइम ही नहीं मिला ओएमआर शीट्स को भरने का, ठीक है? सो डोंट डू दैट। आपको क्या करना है, आप जैसे ही पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको आंसर आ रहा है, मार्क इट इन योर शीट, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं आ रहा, आप अनश्योर हैं, देन ओके, लीव इट एंड इससे आपको पता भी चल जाएगा लास्ट में कि आपने कौन सा क्वेश्चन मार्क नहीं किया, ताकि आप उस पे वापस चले जाएं, ठीक है? सो दैट्स ओके। अगर आपको नहीं आ रहा तो लीव इट फॉर द एंड, या फिर इफ यू आर स्किपिंग इट, अगर आपको वो स्किप करना है तो ओके, लीव इट। बट अदरवाइज अगर आपको आ रहा है एंड यू आर श्योर अबाउट द आंसर, तो प्लीज मार्क इट उसी वक्त, ओके? ओके, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब लास्ट में जो है ना उनको कैलकुलेट करके बस आंसर निकालना है, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि उन कैलकुलेशंस को छोड़ देते हैं, बोलते हैं मैं अगला क्वेश्चन कर लूँ और एंड में जो ना मैं आके उसको जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर मार्क कर दूँगा, ठीक है? डू नॉट डू दैट, ओह माय गॉड, डू नॉट डू दैट। आपको क्वेश्चन, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, फिनिश इट राइट देन एंड देयर, ठीक है? आपको वहीं पे उसको खत्म करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है? बिकॉज़ आपके पास बहुत कम टाइम होता है, यू कैन नॉट कम बैक टू क्वेश्चंस अगेन, ठीक है? अगर आप एक क्वेश्चन को क्रॉस कर रहे हो ना, मेक श्योर यू आर डन विद इट, ठीक है? अनलेस यू नीड टू थिंक, यू नीड मोर टाइम टू थिंक अबाउट इट, दैट्स दैट्स डिफरेंट, बट प्लीज लाइक डू नॉट लीव कैलकुलेशंस फॉर द एंड, ठीक है? ओके, एंड देन लर्न टू सॉल्व फास्टर, ठीक है? कि आप क्या राउंड ऑफ करके जो सॉल्व करते हैं, ठीक है? या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज़ होते हैं जो आप याद कर लेते हैं ना, जैसे अगर वो आएँ तो आपको पता हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अ, सो वेरी एक बहुत ही स्टूपिड सा एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है 5 स्क्वायर क्या होता है, ठीक है? 25, सो यू रिमेंबर दिस। अब ये आपको वहाँ पे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह की कुछ-कुछ चीज़ें जो आप याद कर सकते हो, उनको आप याद कर लो, ताकि वो आपको वहाँ पे फिर से पूरा सॉल्व नहीं करना पड़े, इफ देयर आर एनी, ठीक है? और उसके अलावा जो क्विक डिवीजन होती है ना, राउंड ऑफ करके आप अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालते हो, उस तरह की डिवीजन सीखो, ठीक है? सो ट्राई टू सॉल्व फास्टर, ठीक है? आप सीखो, आप प्रैक्टिस करो, ट्राई टू सॉल्व फास्टर, बी क्विक विथ मैथ्स, ठीक है? आई थिंक फिजिक्स में इतनी ज्यादा मैथ्स होती है, इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक आई रिमेम्बर, लाइक हमारे यहाँ द होल फ्रिकिंग फिजिक्स पोर्शन वाज प्रॉब्लम्स, ठीक है? कोई 1-2 क्वेश्चंस होंगे जिनमें प्रॉब्लम्स नहीं थे, वरना सारे के सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है? तो यू दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू बी एबल टू सॉल्व
मैथ्स फास्ट, ठीक है। तो आपको ये सीखना है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप वहां पे आप जल्दी से कर लो, ठीक है। एंड देन दिस के नोट डाउन योर मेमोरी हेल्प्स ट्रिक्स और निमोनिक्स एज यू एनकाउंटर अ क्वेश्चन नीडिंग दीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्वेश्चन आया है जिसमें फिजिक्स में क्वेश्चन आया है जिसमें आपको साइन 45 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि हम कैसे याद करते हैं साइन कॉस और टेन की वैल्यूज, हम उनको निमोनिक्स के थ्रू या फिर जो भी हमारी ट्रिक होती है ना उससे याद करते हैं। अब क्या होगा कि जब भी वो क्वेश्चन आएगा आपको फिर से वो ट्रिक जो है ना याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि जब भी वो क्वेश्चन आया था ना, फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वेश्चन में साइन 30 की वैल्यू ढूंढनी थी, तो मैंने वहीं पे वो टेबल बना दी, ठीक है। अब आगे अगर वो क्वेश्चन आएगा ना तो आई जस्ट कम बैक टू द सेम टेबल एंड सी द वैल्यू। अब इससे बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा, मुझे फिर से वो टेबल वहां पे याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल we also like we have a lot of mnemonics, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे वो हमारे पास जो केमिस्ट्री में आता है 1s 2s वाला, हम जब एक क्वेश्चन का आ रहा है मेक दैट ट्रिक उधर ही, ठीक है। और अगर दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो इमीडिएटली कम बैक टू द पुराना वाला क्वेश्चन एंड वहां पे आप वैल्यू देख लो, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ क्विक वे जिससे आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर सकते हो और आप अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा सकते हो, ठीक है। सो यू कैन डू दैट, राइट। एंड देन आई थिंक समवन आस्क्ड कि एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, ठीक है। सो अगर तो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, आपने लाइक ऑलरेडी 2-3 दफा ट्राई कर दिया है, तो लीव इट, ठीक है। यू देखो, एक आई ऑलवेज से दिस कि AQ की टेस्ट में योर गोल इज नॉट टू गेट 100, ठीक है। आपका गोल ये नहीं है कि आपको 100% लाना है, आपका गोल ये है कि आपको दोनों पोर्शंस को पास करना है, ठीक है। एंड बाय पास आई मीन लिटरली गेट बेयर मिनिमम। आपके कम से कम मार्क्स हैं लेकिन आपने पास कर लिए हैं, तो देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू AKU एज someone who got like 100% maybe, I don't know, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस सही कर सकते हो उतने ज्यादा सही करो, इंस्टेड ऑफ कि आप एक बहुत सी मुश्किल सा क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, ठीक है। तो जस्ट लर्न टू मैनेज योर टाइम एंड कि आपको अपना टाइम किस पे यूज करना है, ठीक है, और किस तरह से यूज करना है। ओके, नाउ साइंस रीजनिंग। ओके, साइंस रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं होता, ठीक है। आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, देयर विल बी नो करिकुलम में जाओगे ना, देयर विल बी नो syllabus for science reasoning. तो science reasoning में क्या आता है? What even is science reasoning? Oh my god. Okay, so science reasoning has no syllabus. Science reasoning आपके साइंस के सब्जेक्ट से भी हो सकती है, ठीक है। कि हमारे यहाँ एक एक आई थिंक यील्ड वाला क्वेश्चन आया था फर्स्ट चैप्टर का, सो दैट्स वो साइंस रीजनिंग में आया था, ठीक है। तो आपके साइंस सब्जेक्ट से भी आ सकते हैं, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ एक कैनन का क्वेश्चन आया था कि कैनन इज शूटिंग अ बॉल, तो वो कहाँ तक पहुंचेगा, कितनी देर में पहुंचेगा, ऐसा भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। सो देयर कैन बी फिजिक्स, देयर कैन बी बायोलॉजी, देयर कैन बी केमिस्ट्री, तो आपके साइंस सब्जेक्ट से भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ठीक है। आपको लेबोरेटरी का प्रोसीजर थोड़ा सा बताएंगे एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट दैट। आपको रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको कोई पुरानी नॉलेज या कोई ऐसी पर्टिकुलर नॉलेज की जरूरत नहीं होती। आपको जो आपके पास नॉलेज है उसको यूज करके आप रीजन कर सकते हो, ठीक है। तो साइंस रीजनिंग जो है वो कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी लिटरली एनीथिंग, बट इट्स नथिंग दैट यू कांट डू, ठीक है। जो भी होगा वो आपकी लेवल का होगा, आपके सिलेबस से होगा और आपको आता होगा, यू विल जस्ट नीड टू रीजन, ठीक है। विच इज वाई साइंस रीजनिंग, लाइक व्हाट यू मीन, राइट। तो आपको रीजनिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये आप कैसे सीख सकते हो? अगेन, ये कॉन्सेप्ट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और आपको लाइक यू नीड टू थिंक, तो आपको आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, एंड प्रैक्टिस, practice freaking lot, like a lot practice करें आप, पढ़ने से ज्यादा practice करें, I would say actually, because practice is very helpful. Okay, okay, so now we have a sample question, ठीक है। हमारे पास sample question है साइंस रीजनिंग का, साइंस रीजनिंग का sample question है
आपको क्या करना है, you need to go back to the website and answer the question. Okay, so go back to the website जिस पे आप already अपने answers दिए हैं. Go back to the website and answer this question. Did everybody read the question? तो मैं ये जो क्वेश्चन है आपको कमेंट्स में भी दे देता हूँ, ठीक है? अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है तो प्लीज आंसर द क्वेश्चन. Okay, I'll open the question actually. So this is the question. इसको आप पढ़ें, ठीक है? तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने बोला ना, लेबोरेटरी या फिर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन है जो कि सैंपल क्वेश्चन है, बेसिकली एग्जांपल, एज एन एग्जांपल, जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है? Did everybody answer? Should we go and check what the answers are? और उसके बाद हम देखेंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा है. अच्छा, तो 8 आंसर्स जो आए हैं वो एलर्जी टू डाई यानी ए आंसर आया है, ठीक है? एक आंसर जो है वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन आया है, और 2 आंसर्स आए हैं ए हजार्डस केमिकल स्पिल. ओके, और नोबडी थिंक्स कि ये फूड एलर्जी है, ठीक है? तो इफ यू वांट टू आंसर, अब अभी कर लो, बिकॉज वी आर स्विचिंग टैब्स एंड वी आर डिस्कसिंग कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा. Another person said allergy to dye. Okay. Okay, so let's see what the correct answer is. अच्छा, तो क्वेश्चन है कि a scientist working in the laboratory gets a rash and irritation on his skin. ठीक है? He said that he was working with a cosmetic product and it's testing. ठीक है, कि वो एक cosmetic product पे काम कर रहा था, ठीक है, और उसको टेस्ट कर रहा था. What could be a possible reason for his condition? तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है कि साइंटिस्ट को क्या हुआ है, ठीक है? उसको रैश और इरिटेशन हुई है स्किन पे, ठीक है? उसके बाद वो काम कर रहा है एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे, ठीक है, एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे. अब आपको बताना है कि ये रैश और इरिटेशन क्यों हुई है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं और आपके पास ये साइंटिस्ट आया है और आपको बताना है कि ये रैश और इरिटेशन उसकी स्किन पे क्यों हो रही है. अब अगर आप लेट्स से फूड एलर्जी, जो कि किसी ने नहीं बोला, फूड एलर्जी, अब अ साइंटिस्ट इज वर्किंग इन अ लेबोरेटरी और यहाँ पे कहीं पे भी फूड का जिक्र नहीं है. अ साइंटिस्ट
would know better than eating a food in laboratory. ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता because ना तो food का mention है, ना ही यहाँ पे food allergy fit करता है. ठीक है, so allergy may be but food की allergy नहीं है. ठीक है, to see a hazardous chemical spill. तो यहाँ पे आपको कहीं भी बोला गया है कि वो कोई भी hazardous chemical यूज कर रहा था. अब अगर वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहा है या उसको टेस्ट कर रहा है, अब वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कोई ऐसा खतरनाक केमिकल तो नहीं डालेगा ना, ऑब्वियसली, बिकॉज वो कॉस्मेटिक है. ठीक है, लाइक ओवरऑल लेबोरेटरी शायद हो जाए बट वो रेलेवेंट नहीं है. ठीक है, सो सी भी नहीं होगा. बी जो है स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन प्रोबेबली हो सकता है. ठीक है, पॉसिबली, बिकॉज वो स्किन पे होता है. लेकिन बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा कोई मेंशन नहीं है ना कि उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई बैक्टीरिया आके बैक्टीरिया ने उसको इन्फेक्ट किया है, ऐसा कोई कहीं भी क्वेश्चन पे नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो ये भी गलत है. एलर्जी टू अ डाई इज करेक्ट बिकॉज वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहा है और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में वो पॉसिबली डाई यूज कर रहा है. ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उनमें डाई यूज होती है ना, उनमें कलर्स होते हैं या फिर अलग अलग डाइज यूज होती हैं. ठीक है, सो हो सकता है कि उसको किसी डाई से एलर्जी थी. ठीक है, और वो एक्सपोज हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसी भी तरह की दूसरी कोई नॉलेज नहीं होनी चाहिए. आपको सिर्फ अपना कॉमन सेंस लगा के रीजन करना था. ठीक है, आपको लिटरली लिटरली रीजन करना था. ठीक है, सो दिस इज हाउ साइंस रीजनिंग पोर्शन इज. ठीक है, वो इस तरह से क्वेश्चंस देते हैं. ठीक है, तो डू यू गाइस थिंक यू वुड बी एबल टू आंसर दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? सो वी अगेन हैव दूसरा क्वेश्चन. अच्छा, आपको क्या करना है कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना है. ठीक है, और फिर और लाइक टेक अ पिक्चर और समथिंग, और फिर मैं जो है वेबसाइट में जाके उसको आंसर करना है. ठीक है, वहां पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे. ठीक है, अब प्लीज ये क्वेश्चन पढ़ लें and then go back to the website and answer the question. Okay. Okay, अब आप आंसर कर सकते हो. I just changed the slides, so now you can answer. So ये थोड़ा मुश्किल है, right? But let's see how many people are able to get it. अभी तक 3 लोगों ने बोला है B. 3 people answered B. 4 people answered B. Okay, it's interesting. सबको लगता है B आंसर होना चाहिए अभी तक. 5 people saying B, जबकि एक बंदे ने बोला है C.
So so we are gonna wait for a couple more minutes and then we will discuss कि इसका correct answer क्या है. 6 लोगों ने बोला है B and then 1 ने बोला है C. Okay. So 2 और लोगों ने B बोला है. That's 8 people in total. So let's switch the tabs now and see कि correct answer क्या है. Okay. Acha, so the question is, Dr. Lee is testing the solubility of a new salt, X chloride. ठीक है, एक ऐसा सॉल्ट है जिसका एक कंपोनेंट X है लेकिन उसमें क्लोराइड आयंस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे X क्लोराइड इसलिए लिखा है क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्लोराइड आयंस हैं. ठीक है, solubility in water at 25 degrees Celsius. She dissolves equal masses of X chloride in 3 separate flasks. ठीक है, वो 3 अलग अलग फ्लास्क में उसको डाल रही है. ठीक है, और उसको जो है उसकी solubility को चेक करने के लिए. ठीक है, हर एक में जो है वो 100 milliliters of distilled water है. After stirring for 10 minutes, she filters out undissolved salts. ठीक है, 10 मिनट उसको घुमा के वो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट को निकाल रही है. ठीक है, और देख रही है कि अब उसमें कितने जो है उसके आयंस जो है वो डिसॉल्व हो चुके हैं. ठीक है, कितने सॉल्युबल हो चुके हैं. ठीक है, अब फ्लास्क ए में जो सॉल्युबिलिटी है वो है 0.10 मोलर. ठीक है, इतने जो है वो सॉल्युबल हो चुके हैं. ठीक है, या फिर डिसॉल्व हो चुके हैं. बी में 0.25 मोलर्स और सी में 0.10 मोलर्स. ठीक है, तो अब शी रियलाइजेस कि उसने गलती से एक किसी भी फ्लास्क में टैप वाटर डाल दिया है. इंस्टेड ऑफ डिस्टिल्ड वाटर उसने जो है टैप वाटर यूज कर लिया है. ठीक है, अब उसको याद नहीं आ रहा वो कौन सी थी, वो ए थी, बी थी या सी थी. द क्वेश्चन इज कि which flask most likely used tap water. अब वो बताओ, आपको बताना है कि किसमें जो है वो टैप वाटर था. ठीक है, और क्यों जो है वो था. अब आपको अब मुझे आपको अब आपको मुझे ये बताना है कि अगर टैप वाटर यूज करेंगे जिसमें और भी आयंस होते हैं. ठीक है, टैप वाटर में विच कंटेन्स वेरियस आयंस, उससे सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए. वेल आई थिंक कम होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज बिकॉज जो डिस्टिल्ड वाटर है उस पे जो है सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी ना. अगर आप दूसरे आयंस भी लाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है, तो जिसकी वजह से बी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी है. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा डिसॉल्व्ड आयंस हैं, तो बी तो आई डोंट थिंक होना चाहिए. अब यू नीड टू थिंक कि ए होना चाहिए या सी होना चाहिए. ठीक है, अब सो बी वाले ऑप्शंस जो है हम काट देते हैं ना. फ्लास्क बी बिकॉज आयंस इन टैप वाटर फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस जिससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है. सो दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है, कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे वी आर नॉट श्योर कि वो उससे जो है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी. उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है मे बी, बट उसकी सॉल्युबिलिटी और व्हाट डू यू थिंक अपेरेंट कॉन्सेंट्रेशन इज, कि वो कितना हमें लग रहा है प्रेजेंट है. ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है, अगर डी देखें कि फ्लास्क बी बिकॉज dissolved gases in tap water raise temperature locally. So you can't say कि dissolved, आपको पता भी नहीं है कौन से dissolved gases हैं. And no, they do not, they don't necessarily raise temperature. ठीक है, तो बी वाला नहीं होगा. अब आपको देखना है कि फ्लास्क ए होगा या फ्लास्क सी होगा. फ्लास्क सी because hardness ions in tap water precipitate X chloride lowering solubility. तो ये जो है so precipitation से solubility lower हो सकती है. लेकिन what do you think, A वाला ज्यादा appropriate होगा या C वाला? Flask A because the lower X
ion concentration indicates common ion separation from chloride ions in tap water. Which one do you think would be more likely? A होगा ना, because उन्होंने देखो I told you कि उन्होंने बताया है कि X chloride because they want you to see कि X के इसमें chloride ions हैं, ठीक है? तो that means there's something to do with chlorides, ठीक है? Chlorides and उन्होंने बोला है कि tap water जिसमें बहुत सारे और भी ions हैं, so you need to connect the dots, ठीक है? कि common ion separation होगी, ठीक है? Common ion separation होगी जिसकी वजह से उसकी solubility कम हो जाएगी. अब ये जो क्वेश्चन था इसमें आपको कॉमन आयन सेपरेशन के बारे में पता होना चाहिए था, है ना? तो ये आपके सिलेबस में था, सिलेबस से था मोस्टली। तो इस तरह से जो है सिलेबस से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट अगेन दिस वाज मोर रीजनिंग एंड एप्लीकेशन देन सिंपल जो कि केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो दीज वर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको आइडिया देने के लिए आई ब्रॉट। ओके, उसके बाद हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस दैट यू आर इनश्योर अबाउट। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर्स आपको नहीं पता, तो आप उनको कैसे अप्रोच कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट इज कि आपको एजुकेटेड गेसेस करने हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको आपको ये तो पता है ना कि उन्होंने क्वेश्चन में क्लोराइड को एम्फेसाइज किया है, क्वेश्चन में जो है वो वेरियस आयंस बताया कि टैप वाटर में वेरियस आयंस होते हैं। नाउ यू कैन थिंक अ लिटिल इंटेलिजेंटली और आप ये बोल सकते हो कि उन्होंने क्लोराइड पे एम्फेसिस डाला हुआ है और उन्होंने बोला है कि और भी आयंस होंगे, तो दे आर मोस्ट लाइकली टॉकिंग अबाउट कॉमन आयन सेपरेशन, ठीक है? मोस्ट लाइकली may not be true, but this is what you think your guess would be, ठीक है? So this is an educate, एक guess होता है कि like you know, like like winging it, आपको you don't want to wing it, ठीक है? आपको कोई भी नहीं डाल के आ जाना ना, you're guessing using some of your intelligence, ठीक है? So you're making an intelligent guess, ठीक है? आप अपनी common sense को use करके थोड़े clues निकाल के, जैसे यहाँ पे you could have used this, ठीक है? तो yeah, so make an educated guess, आपको ऐसे ही छोड़ के नहीं आना या फिर ऐसे ही कोई भी कुछ भी guess नहीं करके आना, ठीक है? दूसरा यूज एलिमिनेशन मेथड, कि आपको एक-एक ऑप्शन के थ्रू जाके जो आपको सबसे कम लग रहा है पॉसिबल आंसर होगा उसको आप एलिमिनेट कर लें और फिर उसके बाद वाला जो है एलिमिनेट कर लें। फॉर एग्जांपल लास्ट में आपको फिर 2 ऑप्शंस बच गए और उनमें से it's rather it's more it's easier basically to decide an answer between 2 options than let's say among 5, ठीक है? तो आप ऐसे elimination method use करके you can narrow down आपकी जो भी choices हैं उसको narrow down कर सकते हो जिससे आपको थोड़ी सी help मिल सकती है, ठीक है? And then do not spend too much time thinking about those, कि कोई ऐसा questions है question है जिसमें आप unsure हो, ठीक है? तो आपको उसपे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा देना कि आप लाइक बिल्कुल लाइक आपका टाइम खत्म हो जाए और आप अभी भी उस क्वेश्चन पे हो। सो यू डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है? अगर आपको नहीं आ रहा, ट्राई टू मेक अ गेस, ट्राई टू यूज़ एलिमिनेशन मेथड एंड इफ you think you don't want to solve this, you think you will most likely get it wrong, तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है? That's fine. Leave it जैसे ही है, ठीक है? तो yeah. Okay, now why you should choose AQ? अच्छा, तो मैं आपको so because I'm in second year right now, so I can tell you like AKU why do I think AKU is good basically. ठीक है, I wouldn't say better, but like why is AKU good? Okay, तो AKU में जो आपको पढ़ाते हैं ना, this is more clinical based, ठीक है? और वो क्या करते हैं आपकी clinical skills पे ज़्यादा focus करते हैं instead of like just knowing stuff, ठीक है? कि आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली, ठीक है? You know biochemistry now. Now what will you do with it? ठीक है? तो AQU teaches you what to do with whatever you're learning, ठीक है? तो AQU focuses on clinical aspects, ठीक है? AQU prepares you for anything to come or where you can apply, ठीक है? आप जहाँ भी apply करो, AQU prepares you for it, ठीक है? आप जहाँ भी apply करो, whether you're applying for residency in US, whether you're applying, whether you're doing PLAB for UK, AQU prepares you for it, ठीक है? AQU gives you university life because
देखो AKU का कैंपस बहुत अच्छा है. AKU basically gives you like, so AKU is like a very good community, और यहाँ पे बहुत सी societies हैं, बहुत सी चीजें हैं जिससे आप you basically you're able to get some of your load off. ठीक है? So it's basically good, which is important because like medical studies are huge, ठीक है, and they're a lot. So this keeps you sane. AKU encourages co and extracurricular. तो AKU में जो है जब आप आओगे for example, तो शुरू में 2 महीने के लिए आपको ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस पढ़ाया जाएगा. ठीक है, 2 महीने के लिए कोई भी मेडिकल रिलेटेड पढ़ाई नहीं होगी. 2 महीने के लिए आपको जो है वो बेसिकली वहाँ पे वो सिखाते हैं. So आपको फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं. फॉर एग्जांपल you're studying स्पेनिश. आपने स्पेनिश चूज की तो आपको स्पेनिश सिखाएंगे for 2 months. आपको पेंटिंग सिखा सकते हैं, आपको लिटरेचर सिखा सकते हैं. ठीक है, तो 2 महीने जैसे कि आप सेटल हो, आप गेट यूज्ड टू द माहौल वहाँ का. ठीक है, तो 2 महीने के लिए आपकी ये हैज प्रोग्राम चल रहा होता है. और इसके अलावा थ्रू आउट द 5 years देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड ऑफ द बीटन ट्रैक, जिसको हम OTBT बोलते हैं, जिसमें वो आपको अगेन ड्रामा सिखाते हैं, आपको क्रिएटिव राइटिंग फॉर एग्जांपल, फिल्म मेकिंग सिखाते हैं, कैमरा यूज करना सिखाते हैं. तो यू कैन जॉइन दोज प्रोग्राम्स. सो एक्चुअली लाइक focuses on co and extracurriculars a lot, as much as it focuses on your medical curriculum. ठीक है? Again, AKU is a tight knit community, and AKU basically provides you a lot of opportunities. Now, ending the session with I wish I knew. So, what do I wish I knew when I was applying to AKU? Okay, so I wished I knew that I didn't need to memorize everything for AKU. See, I told you there's a lot. The syllabus is freaking a lot. A biology ka syllabus खोलेंगे and it's like 59 pages. Chemistry is a lot. Physics is a lot. Mathematics is a lot. But you do not need to memorize everything. Especially AKU के लिए आपको हर एक चीज याद करने की जरूरत नहीं है. And I wish I knew that because I did sort of memorize a lot of things जो कि बहुत ही useless थी. ठीक है? तो you do not need to do that. I wish I knew कि probability के questions आएंगे. तो if you're preparing for mathematics, please आप probability के questions कर लेना. ठीक है, probability सीख लेना, because हमारे यहाँ like there were 3 questions from probability और मुझे probability नहीं आती थी. ठीक है, so please do probability right, क्योंकि उससे questions आते हैं. ठीक है, और बहुत मुश्किल आते हैं. Okay, so please do that. I wish I knew fees is not on the list of things to worry about at AKU. ठीक है, तो अगर आपको लगता है you can't afford AKU, अगर आपको लगता है कि AKU is for like rich people, that's not true. ठीक है, I was skeptical throughout the process of like from filling the forms till getting in. I was skeptical कि fees का क्या होगा, right? Because I could not afford it. But I trust me, like fees जो है वो सबसे लास्ट चीज है जिसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत है कि पे. ठीक है, there are more and a lot of things that you would be worrying about, but fees is not one of them. ठीक है, I wish I knew science reasoning portion cannot be prepared for enough, right? Science reasoning portion बहुत ही random होता है. It's literally so random कि like you cannot say कि you're done preparing for it. ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि you're done preparing for like freaking science reasoning portion. ठीक है, so just do what you can and just maybe like wing it. I don't know, but yeah, I think you'll do well अगर आप practice कर लें. ठीक है, so that's it. We end our session. Thank you for joining, and if you have any questions, I'm happy to answer those. If you have any questions, please write them down in the comment box and I'll answer those for you. So final merit list. So test के बाद they usually take like 15 to 20 days. ठीक है, 15 से 20 दिनों में जो है so I think that's what you're talking about, right? तो 15 से 20 दिनों में वो टेस्ट का रिजल्ट देते हैं, फिर इंटरव्यूज होते हैं. आई थिंक अगले 5 दिनों के बाद या 2-3 दिन में इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं, जो कि फिर
sort of 1 महीना चलते हैं, ठीक है? और फिर वो दे यूजुअली टेक लाइक 2 मंथ्स, ठीक है? 2 महीने लेते हैं वो इंटरव्यू का रिजल्ट देने में। सो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 2 महीने के बाद लगती है आफ्टर द इंटरव्यूज़। यूजुअली इट्स इन नवंबर, यूजुअली, ठीक है? और यू जॉइन इन लाइक जनवरी और समथिंग, तो अब जनवरी में जॉइनिंग होती है, ठीक है? So Kingdom Anime. So what are your questions? So the hostels, so I'm literally in hostel right now, और hostels जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, I would say. Um, so everybody gets a separate room. तो so if you get in और आप पहले जब join करोगे तो I think the girls जो है उनको ऑन कैंपस रूम मिलता है, और जो लड़के हैं उनको मोस्ट लाइकली लाइक 1 साल के लिए दे कीप यू ऑफ कैंपस, और फिर 1 साल के बाद आपको ऑन कैंपस रूम मिल जाता है, ठीक है? सम ऑफ यू इफ यू लकी इनफ, तो यू गेट ऑन कैंपस रूम पहले साल में ही, बट हॉस्टल फैसिलिटी इज प्रीटी गुड। यहाँ पे फूड भी सब्सिडाइज होता है फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है? तो यू गेट लाइक इकोनॉमी मील 3 times a day, ठीक है? तो so that's not a worry, ठीक है? Cafeteria में you can eat whatever you want, like, so you get economy meal 3 times a day, so that's not an issue. So math के लिए आपको I think there are topics जो कि I think pre-med provided you with all topics, right? तो जो भी topics हैं जो math में most likely आते हैं वो pre-med or like reach out to someone from pre-med और वो आपको दे देंगे। ठीक है? So yeah, if everybody so if nobody has any more questions, I think we can end this. So we talked about how you can manage your time. Um, so so I told you a lot of ways to कि आप हर एक पोर्शन को टाइम कैसे दे सकते हैं, ठीक है? तो यू कैन फॉलो दैट, राइट? और उसके अलावा जो है आप यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आई थिंक you'll get a hang of it, right? जैसे ही आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे and you'll know कि किस तरह के questions you might be getting in on your test. तो उसके बाद you'll be good. ठीक है? So if nobody has any more questions, we can end this. So math के लिए I think practice again, like practice a lot. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है ना, लाइक बैठ के पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करें।
and learn from that. ठीक है? So practice like freaking a lot. So practice is what I would say. I think उसके लिए आपको pre-med से पूछना पड़ेगा. So you reach out to someone from pre-med and they'll let you know. So you only need to pass MDCAT. So MDCAT का passing criteria जो भी है आपको pass करना है. उसके अलावा it doesn't matter. You just need to pass the MDCAT. So yeah, we'll do the papers. We'll sure do that. I think they take like 100 students only. ठीक है तो हर साल सिर्फ 100 लोग enroll होते हैं. Out of I think 7,000 people apply, 300 pass the test, and then 100 get in. Well, if you think about it, जो syllabus है वो तो पूरा FSC वाला है ना. So it's actually harder for A-level students to pass. So, but anyway, I think it depends on your practice and your preparation. जो ज़्यादा अच्छी preparation करेगा, they'll sure get in.